आज हम जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के एमसीक्यू देखने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डज जीएमपी स्टैंड्स फॉर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? जीएमपी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट गुड मेडिकल प्रैक्टिस, सेकेंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, थर्ड जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल, फोर्थ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जीएमपी स्टैंड्स फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सेकेंड, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमपी इन फार्मास्यूटिकल्स? जीएमपी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, टू रिड्यूस टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकेंड टू इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स, थर्ड टू इंक्रीज मार्केटिंग एफिशिएंसी, फोर्थ टू सिंप्लीफाई रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस। जीएमपी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड करेक्ट। थर्ड MCQ, which organization provide international guidance for GMP? Which organization provide international guidance for GMP? First, World Health Organization, second, Food and Agriculture Organization, FAO, third, International Monetary Fund, IMF, fourth, World Trade Organization, WTO। इसका आंसर है फर्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Fourth, GMP regulations are enforced by which authority in the United States? First, Environmental Protection Agency, EPA. Second, Food and Drug Administration, FDA. Third, Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Fourth, Occupational Safety and Health Administration, OSHA. GMP regulations are enforced by Food and Drug Administration. Second, correct, FDA. Fifth, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी? जीएमपी का कोर प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट, मिनिमाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन, सेकेंड, इंश्योरिंग ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, थर्ड, रिड्यूसिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग, फोर्थ, इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स। कोर प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी इज इंश्योरिंग ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड करेक्ट। सिक्स नंबर का MCQ, what is a key component of GMP related to personnel? First, hiring unqualified staff, second, providing adequate training and hygiene practices, third, limiting employee access to production areas, fourth, avoiding documentation of employee activities। इसका आंसर है सेकेंड, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। 7, which document is essential for GMP compliance to ensure processes are reproducible? First, marketing plan, second, standard operating procedure, SOP, third, financial report, fourth, employee attendance record। इसका आंसर है सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP। What does GMP require for equipment used in manufacturing? First, equipment should be obsolete. Second, equipment must be calibrated and maintained regularly. Third, equipment should be inexpensive. Fourth, equipment does not need validation। इसका आंसर है सेकेंड, इक्विपमेंट मस्ट बी कैलिब्रेटेड एंड मेंटेन्ड रेगुलरली। 9th, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्लीन रूम इन GMP कंप्लाइंट फैसिलिटीज़? क्लीन रूम का पर्पज़ क्या है? टू स्टोर रॉ मटेरियल्स, सेकेंड, टू कंट्रोल कंटामिनेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, थर्ड, टू कंडक्ट मार्केटिंग मीटिंग, फोर्थ, टू ट्रेन एम्प्लॉय। इसका आंसर है सेकेंड, टू कंट्रोल कंटामिनेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। 10, which aspect of GMP ensure that raw material meet quality standards? First, quality control testing, second, marketing analysis, third, cost reduction strategies, fourth, production scheduling। इसका आंसर है फर्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। What is a key requirement for GMP compliant storage area? First, high humidity level, second, control the temperature and humidity conditions, third, open access to all employees, fourth, no labeling requirement। इसका आंसर है सेकेंड, कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ GMP गाइडलाइन? नॉट अ पार्ट ऑफ GMP guidelines. First, documentation, second, quality assurance,
थर्ड प्रोडक्ट प्राइसिंग, फोर्थ वैलिडेशन ऑफ प्रोसेसेस। इसका आंसर है थर्ड प्रोडक्ट प्राइसिंग। Product pricing not a part of GMP guidelines. Next question. What does GMP emphasize regarding product complaints? First, ignoring customer feedback. Second, investigating and documenting all complaints. Third, limiting complaint investigation. Fourth, delegating complaints to marketing teams. इसका आंसर है सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन एंड डॉक्यूमेंटेटिंग all complaints. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बैच रिकॉर्ड इन GMP? बैच रिकॉर्ड का पर्पज़ क्या है? फर्स्ट, टू ट्रैक प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर ट्रेसेबिलिटी. सेकेंड, टू रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम. थर्ड, टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स. फोर्थ, टू मैनेज एम्प्लॉय शेड्यूल्स. पर्पज़ ऑफ बैच रिकॉर्ड इन GMP, टू ट्रैक प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर ट्रेसेबिलिटी. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. Which GMP principle ensure that products are free from contamination? First, quality by design. Second, good hygiene practices. Third, cost optimization. Fourth, rapid production. इसका आंसर है सेकेंड, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a critical aspect of GMP for packaging materials? First, using untested materials. Second, ensuring materials are compatible with the product. Third, avoiding labeling requirements. Fourth, using low cost materials only. इसका आंसर है सेकेंड, ensuring materials are compatible with the product. What does GMP require for quality control laboratories? First, no documentation of test results. Second, qualified personnel and validated methods. Third, minimal testing of products. Fourth, outsourcing all testing activities. इसका आंसर है सेकेंड, क्वालिफाइड पर्सनल एंड वैलिडेटेड मेथड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच GMP requirement helps prevent mix-up during production? First, clear labeling and segregation of materials. Second, reducing production staff. Third, avoiding documentation. Fourth, using identical packaging for all products. इसका आंसर है फर्स्ट, clear labeling and segregation of materials. What is the role of validation in GMP? वैलिडेशन का रोल क्या है GMP में? फर्स्ट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन स्पीड. सेकेंड, टू कंफर्म प्रोसेसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स. थर्ड, टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. फोर्थ, टू एलिमिनेट क्वालिटी कंट्रोल. इसका आंसर है टू कंफर्म प्रोसेसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स. वैलिडेशन का रोल है टू कंफर्म प्रोसेसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट. आंसर नंबर सेकेंड करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which GMP principle ensure product consistency across batches? First, random sampling. Second, process validation and control. Third, uncontrolled production. Fourth, minimal documentation. इसका आंसर है सेकेंड, प्रोसेस वैलिडेशन एंड कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. What is a key GMP requirement for water used in pharmaceutical manufacturing? First, it must be potable but not purified. Second, it must meet pharmacopoeial standards. Third, it can be untreated. Fourth, it does not require testing. इसका आंसर है सेकेंड, it must meet pharmacopoeial standards. Next question. Which of the following is a GMP requirement for documentation? First, incomplete records. Second, clear, accurate and up-to-date record. Third, no record repetition. Fourth, verbal instruction only. इसका आंसर है सेकेंड, clear, accurate and up-to-date records. 23. What does GMP require for handling deviations in manufacturing? First, ignoring deviations. Second, investigating and documenting deviation. Third, avoiding corrective actions. Fourth, reducing quality checks. इसका आंसर है सेकेंड, investigating and documenting deviations. 24. Which regulatory body enforces GMP in the European Union? First, European Medicine Agency EMA. Second, European Food Safety Authority EFSA. Third,
European Central बैंक ECB. फोर्थ यूरोपियन इन्वायरमेंटल एजेंसी EEA. इसका आंसर है फर्स्ट यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA. 25. What is the significance of GMP audits? First, to increase production cost. Second, to ensure compliance with regulatory standards. Third, to reduce product quality. Fourth, to limit employee training. इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन, to ensure compliance with regulatory standards.